Hello friends, I'm Sudhir and you are enjoying the YouTube channel English Carnival, a journey of learning with joy. Friends, this channel is dedicated to English language, literature, criticism, academics, motivation and many more. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इसके पहले जो हमारे 3 कंसेक्यूटिव वीडियोस थे जिसमें हमने लर्न टू स्पीक इंग्लिश, सीवी और रिज्यूमे में क्या फ़र्क होता है या रिज्यूमे और सीवी कैसे बनाया जाता है, उसमें किन किन बातों का जिक्र करना इम्पॉर्टेंट है, इन सब बातों पे या इन सब विषयों पे हमने चर्चा की थी। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहो तो बाद में उस लिंक के सहारे वो वीडियोस आप देख सकते हो। और ये जो है फ्रेंड्स, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मेरे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के आधार पर, या उन्होंने मुझे विनती की कि इंटरव्यू को जाने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, उस पर आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास यहाँ किया है। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपलोडेड वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल इन कमिंग डेज। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो किसी भी इंटरव्यू को अपीयर होने से पहले या उसे फेस करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है या क्या प्रिपरेशन करना इम्पोर्टेंट बनता है, इस पे फोकस्ड रहेगा। बाद में शायद हम इंटरव्यू स्किल्स या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस, इस पे हम आने वाले दिनों में एक आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि ये वीडियो आप स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन। Friends, it is said that the job interview is not a test of our knowledge, but our ability to use it at the right time. It is quite natural that if someone is going to appear for an interview, then he or she wants to prepare hard for that in all respects or in all aspects. But there are certain things that one needs to do in advance before appearing for an interview. दोस्तों, ये जो इंटरव्यू को जाने से पहले एक्सप्लोर या प्रिपेयर करने वाली बातें हैं, उसमें इन सब बातों का जिक्र करना या इन सब बातों की इनकॉर्पोरेशन होती है, जैसे कि कंटेंट या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्टिंग, ग्रीटिंग प्रैक्टिस या अभिवादन अभ्यास भी हम उसको कह सकते हैं, माइनर स्टडी ऑफ द रिज्यूमे यानी अपने रिज्यूमे का सही ढंग से अध्ययन, हाइपोथेसाइजिंग द क्वेश्चंस जिसको हम प्रश्नों की परिकल्पना भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो है एक्सप्लोरिंग द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब पोजीशन टू विच यू हैव अप्लाइड और यू आर गोइंग टू अप्लाई। एक्सप्लोर द स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इट मीन्स जैसे कि अलग अलग प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं, तो उसका सही ढंग से अध्ययन करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। आपका अटायर या पहनावा क्या होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, और एक्सप्लोर द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू एंड इट्स डायरेक्शन इन एडवांस्ड। एंड द लास्ट वन होता है बी पंक्चुअल और बी ऑन टाइम, यानी सही समय पे वहां पे पहुंचना। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब इसे हम थोड़ा विस्तृत में वन बाय वन देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है कंटेंट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्टिंग। Friends, we need to revise the entire course, or we need to go through all the content that we have studied earlier while acquiring the formal education. It could be any kind of education or any kind of course. We need to prepare the content according to the job requirement and the post to which you have applied or you are going to apply. We have to explore some threads from the curriculum we have studied, and it needs to be framed properly as per the requirement, structure, nature and scope of the job or job position to which you have applied. Therefore, friends, we must revise the content and our knowledge and test it accordingly. दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो है ग्रीटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं वो इंटरव्यू देने का उनका अनुभव जो होता है वो कम होता है, और उसके कारणवश इंटरव्यू हॉल में जाते ही उन्हें थोड़ा सा नर्वस फील होता है या थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, और यही नर्वसनेस सब काम बिगाड़ देता है।
Friends, as it has been said that the first impression matters a lot, in the same way, our first impression starts being observed by the interviewers from the way we greet them, the way we approach them after entering into that particular hall. Friends, we need to be quite polite, and our body language should also be very much formal and professional as well. We need to enter into the interview hall with proper permission, like, may I come in, sir? May I come in, ma'am? After entering into that hall, we need to greet them one by looking at them respectively. We can greet them as good morning, sir, good morning, ma'am, good afternoon, sir, good afternoon, ma'am, or whatever the time is. If there is panel consisting of male and female interviewers, then we need to look at everyone and greet them accordingly, with having pleasant smile on your face. Our nervousness should not be reflected at all on our face while interacting with them or while greeting them. दोस्तों, इसके बाद जो है वो है माइन्यूट स्टडी ऑफ द रिज्यूमे। दोस्तों, हमें अपने खुद के रिज्यूमे का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम आइडियलिज्म के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें अपने रिज्यूमे में लिखते हैं, और जब उन सब बातों को डिफेंड या जस्टिफाई करने का समय आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों, we have already discussed all these things in our previous video, which was about the resume and CV, and what are the significant elements need to be mentioned in CV or resume. All those things should be quite sincerely written so that we may defend it properly, especially our educational details, expertise, and personal details, if experience we have. So all these things should be mentioned properly. So इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है hypothesizing the questions. Friends, it is quite important part of the interview, and mostly the selection is based on this element or this part. Therefore, you need to note down certain probable questions which may be asked by the interviewers. You should prepare a questionnaire rather, covering the questions based on the content or course rather you have gone through or studied, or project completed recently. It should be about your hobbies and the profile of the job you have applied for. The questions you are going to prepare should cover all these things in brief. Next we have, friends, exploring the details of organization and job position. दोस्तों, हम जिस संस्था, कंपनी, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि उसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, फाउंडर मेंबर्स कौन है, किस किस क्षेत्र में वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट काम करती है, पिछले 4-5 सालों का उसका परफॉर्मेंस कैसा है, या इस तरह के सभी घटकों की जानकारी आपके पास रहना जरूरी है। Along with all these things, friends, you should know all types of details about the post you are applying for. For example, its profile, working areas, rights, limitations, hierarchical structure rather, and all such things. इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है explore the steps of interview and prepare accordingly. Friends, there are different kinds of interview, and just I have told you, and it depends on the post or position you are applying for. For example, in private companies or organizations, there are 4 or 5 steps of interviews, like personal interview, group discussion, behavioral interview, then presentation, then HR round, and so on. Mostly the type of interview is supposed to be shared with the candidate in advance in an interview letter or your call letter. But if they do not let you know, then better to ask the recruiters directly about it so that you may prepare accordingly. इसके बाद जो आता है वो है बहुत important, और वो है attire, यानी आपका पहनावा या पोशाक. Friends, it is said that dress for the job you want and not the job you have. Friends, we should prefer the formal dress in which we feel comfortable to stand, sit, and walk. It should be completely wrinkle-free and professional one. It should be properly ironed and dry cleaned one.
better to prefer light colors and avoid using extensive perfumes and all, as many people are sensitive and allergic, and extensive use of perfume may disturb the interviewers or the people who are in the interview hall. Using tie and suit depends on the category of interview you are going to face. To do it accordingly, wear black well polished shoes with proper socks, and one needs to have simple jewelry and slight makeup, especially for girls. इसके बाद जो आता है वो है confidence. We need to be confident. Friends, our interviewers are keen observers and they minutely observe you right from your appearance before them to the last moment. Therefore, friends, we need to be very calm, polite, confident, and our expressions and body language must reflect our confidence or all these things. After all, friends, your arrival, walk, way of greeting, shaking hands, sometimes way of sitting, body language, gestures, postures, everything shows your confidence level. So confidence is the key to crack any kind of interview, and it should be in your mind forever. In order to build the confidence, friends, we can have pep talk before the interview or before some days of interview, where you can increase the confidence level with the help of your well-wishers. Do not compare with other candidates and just try to give your best performance ever in your interview. Keep in mind that we are supposed to keep in mind that the post or the position is made only for you and you strongly deserve it. The remaining candidates have nothing to do with you and your deserving job or position. Just develop this kind of thinking or notion in your mind and face the interview. I'm sure you will definitely crack it. The next one we have, friends, explore the venue of interview in advance. Friends, better we explore the venue or address where the interview is scheduled, so that on the day of interview we may not face any inconvenience. Try to know about all the directions and routes to reach the venue without hassle and any issues. Be prepared with vehicle or transportation, whatever facility you have, and confirm all these things prior to the day of interview. The next one and the last we have, that is be on time. Friends, we need to leave early and reach the venue on time. That means before the given time. We have to reach the venue at least before half an hour, so that we shall have proper space or time to be settled down and acquainted with the typical atmosphere of that venue. Friends, after reaching there, try to be very much calm and confident without having unwanted streams of thinking in mind. Just wait calmly in waiting room for the call, and once you get the call, say I am the best to yourself and appear before the interview panel with great confidence. So friends, wish you all the best to all of you. So friends, this is what I wanted to share with you all about certain steps of preparation for a job interview through this video. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम जल्द ही मिलते हैं एक अलग टॉपिक और अलग कंसेप्ट के साथ। टिल देन, I just request you to take care of yourself and be happy. Thank you very much.